हेलो और आप सबका स्वागत है। मैं सुमित श्रीवास्तव आज के वेबिनार में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम इस वेबिनार को शुरू करें, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इस वेबिनार को ज्वाइन करें जल्द से जल्द। और मिस्टर एमिल हमारे साथ हैं, जो कि आज के इस लीडरशिप वेबिनार को, लीडरशिप ट्रेनिंग को लीड करने के लिए हैं और आप सभी को ज्ञानान्वित करने के लिए है, आप सभी को ट्रेन करने के लिए इस वेबिनार में मौजूद है। तो मैं मिस्टर एमिल का स्वागत करना चाहूंगा, बट उससे पहले हम चाहते हैं कि मैक्सिमम 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 लोग इस वेबिनार को ज्वाइन करें, मैक्सिमम लोग यहाँ पे सहयोग दें अपना। एंड जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स ताकि मैं उन सभी को कोच बना सकूं। जितने भी लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं, मैं उनको कोच बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका स्वागत है इस वेबिनार में। आप ऑलरेडी कोच हो राजन सर। ओके, सो हम इस वेबिनार को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वेबिनार। एंड आज का जो वेबिनार है वो 90 डे रन का डे 5 है। और यहाँ पे हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो कि इस पूरी प्रेजेंटेशन को लीड करने वाले हैं और इस पूरी प्रेजेंटेशन में हमारा साथ देने वाले हैं। और मैं आपको आसान भाषा में उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट द होल वेबिनार इनटू आर लैंग्वेज, हिंदी। तो ये वेबिनार उन सभी हिंदी स्पीकिंग पार्टिसिपेंट्स के लिए होगा जो कि हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। मैं आप सबका Recording in progress. वेलकम एवरीवन एंड लेट्स इनवाइट मिस्टर एमिल। Thank you so much, Sumit, and all other leaders in this amazing team. And I'm really excited for today's call because today we're going to go deep into what is the difference between a huge leader and the one who's never creating big success. We're going to talk about that today. और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और साथ ही साथ आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या वो डिफरेंस है एक बड़े लीडर में और उन लोगों में जिनके पास कभी भी सफलता नहीं होती। And right now we're in the 90-day game plan. This is all about growing the community, growing the leadership, creating better results, training people to become real leaders. And it's so important that we do it right now. और अभी हम 90 डेज गेम प्लान में हैं और जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है टीम्स को ग्रो करना, इस पूरे प्लान को ग्रो करना और सभी को ग्रो करना। While we understand how Alex is continuously working on the business, expanding the ecosystem and building the best company in the world, we need to step up and build the strongest leadership in the world. And that is why we're hosting these trainings and calls. और हमें पता है कि एलेक्स कितने ज्यादा यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। एलेक्स यानी कि जो फाउंडर है कंपनी को, कितने मेहनत कर रहे हैं, वो कितने तत्पर हैं कंपनी को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके। और हमारा कर्तव्य है कि हम बिल्ड करें यहाँ पे लीडरशिप। And in this industry, there's too many leaders. Everyone is a leader. People sign up to a company and they say, I'm the biggest leader. And today we're going to talk about what a real leader is. और हम सब बात करते हैं लीडरशिप की और हम सब बात करते हैं साइनिंग अप अकाउंट्स की, लेकिन अभी हम बात करेंगे ट्रू लीडरशिप की। And there's actually 5 levels of leadership, and most people don't know this. They just think there's one way. It's I'm a leader or I'm not a leader. No, there's 5 different levels. और यहाँ पे 5 अलग अलग लेवल की लीडरशिप है जो हम आपको बताना चाहेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ एक ही तरीके का है, एक लीडर है और एक नॉन लीडर है। नहीं, ऐसा नहीं।
The first level of leadership is very easy to reach. You sign up into a company, and because you are the first one to sign up, the people coming to your team, they have to follow you because you came first. और यहाँ पे आपको करना पड़ता है साइन अप सबसे पहले, और जब भी कोई नया व्यक्ति आता है कंपनी में, उससे वो आपको फॉलो करेगा. And weak leaders always stay here. They just try to be first. That's why they join new companies all the time. They try to be lucky because the only way for them to succeed is to come first. और जो सबसे कमजोर लीडर होते हैं ना, जो सबसे वीक लीडर होते हैं, वो सबसे ऊपर की पोजीशन पे बैठे होते हैं. सबसे ऊपर की पोजीशन पे जल्दी से जल्दी कंपनी को ज्वाइन करके, जल्दी से जल्दी एक सिस्टम को ज्वाइन करके सबसे ऊपर की पोजीशन ले लेते हैं, ताकि उनको आने वाले समय में काम ना करना पड़े. But in this company, we know that Alex has been here for 7 years. He's going to be here for another 7, 10, 20 years. So we don't need to worry. And everyone who leaves, they will come back again. So we are forcing people to grow as leaders in this platform. और हमें पता है कि एलेक्स इस कंपनी को लगभग 7 वर्ष से चला रहे हैं, और हमें पता है कि यहाँ पे उन लीडर्स की जगह नहीं है. And for you to go to level 2 of leadership, you need to build relationships with your team members. You need to build and ask them questions, build stronger friendship, and then they want to follow you, not because they have to, but because they want to and they like you. और दूसरे लेवल की लीडरशिप है जहाँ पे आप अपने लोगों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं, जहाँ पे आप अपनी कम्युनिटी के साथ वो रिलेशन बिल्ड करते हैं, जहाँ पे लोगों को जरूरी नहीं है आपको फॉलो करना, लेकिन वो चाहते हैं आपको फॉलो करना. And to go from level 2 to level 3, we need to produce results, because now people start following you because they like you. But for you to get bigger leadership, you need to create results. You need to rise in the ranks of the company and show people that you are serious. और आपको तीसरे लेवल पे जाने के लिए रिजल्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे. आपको सफलता की स्टोरीज क्रिएट करनी पड़ेंगी. और जब अगर आपको लेवल को राइज करना है तो. And now people follow you because they see that, wow, you are becoming successful, and more people start following you now. और आपको पता चलता है कि आप सक्सेसफुल हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग आपको फॉलो करते हैं. And many leaders, they get to this point, they go to a high rank, but they can never build a massive team because the ego gets too big, and that's why they never go to level 4. और इसी वजह से लोग अपने लेवल को अपग्रेड नहीं कर पाते और लेवल 4 पे अपग्रेड नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर बहुत बड़ा ईगो है, अहंकार है. So for you to develop to level 4 leadership, you need to develop success stories in your team, because now people can see that you are successful and you can help others become successful. और अब आपको यहाँ पे नंबर 4 पे जाने के लिए लोगों को सफल बनाने की जरूरत है, क्योंकि आप सफल हो गए, अब आपके साथ जो लोग कनेक्टेड हैं वो भी सफल होने चाहिए. Now more people will join because they will look at you as a leader that people like. You have results and you create results for others. Now you're becoming a strong leader and more people will follow you. और अब आप एक बहुत शक्तिशाली लीडर बनते जा रहे हैं, और ज्यादा लोग अब आपको फॉलो करना शुरू करने वाले हैं. And then to get to the highest level of leadership, which is level 5, you need to be an individual that really have the right principles and people follow you because they respect you. और सबसे इम्पोर्टेंट है ये 5वें लेवल का लीडरशिप, जहाँ पे लोग आपकी रिस्पेक्ट से, आपके आदर से शुरू करेंगे. So the difference between a level 4 and a level 5 leader is as following. Imagine someone comes to you and they say, I want to put in $1 million into this company, and you then find out that they come from someone else in your team. Can you repeat, please? Yes. So the difference between level 4 and level 5 leader is that, imagine this scenario. Someone comes and say, I have $1 million, I want to invest.
और लेवल 4 और लेवल 5 के लीड में डिफरेंस क्या है? अगर कोई एक व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि मुझे $1 मिलियन इन्वेस्ट करना है, and you ask, how did you find out about this company? और आप पूछते हैं कि कैसे आपको इस कंपनी के बारे में पता चला, And they say, I heard it from someone else, which is already in the business, but I want to go with you. और वो कहता है कि मैंने ये किसी और व्यक्ति से सुना, लेकिन मुझे आपके साथ शुरू करना है. A level 4 leader, they would maybe say, okay, come, because they think a little bit short term and they will make a big commission. So they recruit the person. और लेवल 4 का जो लीडर है, वो कमीशन के लिए वो रिक्रूट कर लेगा व्यक्ति को. But the level 5 leader, they said, no, you were introduced by someone else. You need to join their team. And what happens? Now people respect you and they trust you, and you are now a level 5 leader. This is one example. और लेवल 5 का लीडर क्या बोलेगा उस व्यक्ति को? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता. आपने किसी और से प्लान सुना है तो आपको उस व्यक्ति को ज्वाइन करना पड़ेगा. इस वजह से ही आपके लिए लोगों के मन में रिस्पेक्ट होगी. So it's very important to ask yourself, where are you in these different levels, and to always try your best to get to the next level. और अब आपको देखना है कि आप इनमें से कौन से लेवल पे हैं, और हमेशा ट्राई करना है कि आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं. So this is the foundation of leadership. Now let's go deeper and talk about what is required to become a stronger leader. और ये फाउंडेशन थी लीडरशिप की. अब क्या वो जरूरतें हैं एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनने की? First step as a leader is to start off as a great follower. And to be a great follower, we need to listen, we need to learn, and we need to look at the successful leaders, and we need to follow what they are sharing. और सबसे महान लीडर्स जो हैं वो सबसे महान फॉलोवर है. इस वजह से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी सुनने की, सीखने की, समझने की. और जब आप लोगों को सुनते हैं, समझते हैं, उनसे उनके सामने लीडर के सामने जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, तभी आप एक अच्छे फॉलोवर और अंत में अच्छे लीडर बनते हैं. And we need to look at what are the great leaders doing in terms of all these different skills. For example, teamwork. How do they take care of their team? और आपको देखना पड़ेगा कि क्या है जो सबसे बेहतरीन लीडर्स करते हैं, क्या वो करते हैं. A strong leader need to have competence. So you need to have the knowledge about crypto, about network marketing, about the company. So when people come to you, you have answers to the questions. सबसे पहला है टीम वर्क, दूसरा है कॉम्पिटेंस, जहाँ पे आपके पास नॉलेज होनी चाहिए अपनी कंपनी की, आपके पास वो कॉम्पिटेंस होना चाहिए जहाँ पे आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कंपनी की, क्रिप्टो की, क्या चल रहा है मार्केट में, हर वो चीज की. You need to be responsible as a leader. You need to be the one who takes initiative, do the training, support people in the best way so they can grow in their teams. और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने होने चाहिए जहाँ पे आप वो जिम्मेदारी ले रहे हैं लोगों की ग्रोथ की. You need to be a person that brings motivation to your teams. When they are negative, when they are not want to work, you need to be the person that is bringing positivity and motivation to your team. That is a strong leader. आप वो व्यक्ति होने चाहिए जो अपनी टीम में मोटिवेशन, पॉजिटिविटी लाए जब सब कुछ डाउन हो, जब लोगों का मोटिवेशन डाउन हो. As a strong leader, you need to learn the skills. And Danish, in the previous training yesterday, spoke about the 7 skills of network marketing. You need to know them and master them. और आपको स्किल्स चाहिए. दानिश ने कल के वेबिनार में हमें बताया कि क्या वो 7 स्किल्स हैं एज ए नेटवर्क मार्केटिंग, आपको नेटवर्क मार्केटर आपको चाहिए. You need to be able to communicate. You need to be able to handle tough situations. When there is a fight in your team, you as a leader need to step in, communicate, and help them. This is a role as a leader. आपको लोगों को सपोर्ट करना है, आपको कम्युनिकेट करना है, लोगों को हेल्प करना है. And this last point is, as a leader, you need to be powerful. People need to feel that you are
decided to go somewhere, you are someone strong, you are someone with a vision, you're someone that is not getting afraid or negative easily, that is going to help you grow as a leader. और एज ए लीडर आपको पावरफुल होने की जरूरत है, एज ए लीडर आपको शक्तिशाली होने की जरूरत है, ताकि लोग आपको देखें और वो बिलीव कर पाए, वो समझ पाए कि हाँ ये व्यक्ति है जो हमें लीड कर सकता है. And it's very important to understand, because sometimes when we say become a leader, sometimes people get too big ego and they become a boss instead. और कभी-कभी लोगों का बहुत बड़ा ईगो हो जाता है और फिर वो बॉस बन जाते हैं. So there's a big difference between a leader and a boss, and we want to become a leader. और एक बहुत बड़ा डिफरेंस है लीडर और बॉस में, और हमें लीडर बनना है. A leader would coach people, a leader would generate enthusiasm, and a leader would say, we will do this instead of you do this. और लीडर जो होगा वो कोच करेगा लोगों को, लीडर एंथुसियाज्म क्रिएट करेगा, लीडर आई नहीं बोलेगा, लीडर बोलेगा हम एक साथ करते हैं. A leader would go and take responsibility when there's problems. A leader would show people how it is done and not only talking about it. और लीडर जो होगा वो जिम्मेदारी लेगा, जब भी कभी प्रॉब्लम्स होंगी, समस्याएं होंगी, लीडर बताएगा कि ये चीज कैसे की जाती है, ना कि वो सिर्फ अपने अपने तक सीमित रखेगा. And you give more credit to your teams. You give, when someone does something good, you tell them they did good. And if something goes wrong, you take more responsibility. This is leadership qualities. और अगर कुछ अच्छा हो तो आप लोगों पर डाल रहे हैं, और अगर कुछ गलत हो तो आप उसकी जिम्मेदारी भी लेना सीख रहे हैं. And the last point, which is the most summary of these two, is a leader say, let's go together. A boss said, go. Just tell people to do things, but they're not doing it themselves. और जो एक लीडर होता है वो कहता है कि आओ सब एक साथ जुड़ के खेलते हैं और सब एक साथ चलते हैं, और बॉस है वो बोलता है जाओ तुम करो. So when we ask what is leadership, we have to understand that people will never do what you say. They will do what you do. So if you want better leaders in your team, you have to become a better leader first. लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हो. इसलिए आप सबसे बड़े एग्जाम्पल होने चाहिए अपनी टीम के. And if you take strong actions that makes people motivated, they see, wow, you are doing something positive, and you inspire others, they want to dream more because you created results, then you are a real leader. और अगर आपको इंस्पायर करना है लोगों को, अगर आप ज्यादा करते हैं और आप उनको ज्यादा सपने दिखाते हैं, तो आप एक लीडर हैं. If you want your team to recruit more people, you need to recruit more people, and the team will do what you do. और अगर आप चाहते हैं कि लोग ज्यादा लोगों को रिक्रूट करें, तो सबसे पहले आप ज्यादा लोगों को रिक्रूट करो, तो टीम डुप्लीकेट करेगी सेम. And when we are becoming bigger and bigger leaders, it is important to understand where to spend your time and who are you working with. और आपको समझना पड़ेगा कि आप किसके ऊपर समय खर्च कर रहे हैं और किसके साथ आप काम कर रहे हैं. When you're new in this industry, you get excited anytime someone joins your team and you work with everyone. But as you become a stronger leader, you need to qualify who is it that you're working with. और जब भी आप नए होते हैं इस इंडस्ट्री में, तब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं और सबके साथ काम करते हैं. लेकिन जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्ग लीडर बनते हैं, वैसे वैसे आप चूजी हो जाते हैं और आप देखने लग जाते हैं किसके साथ काम करना है और किसके साथ नहीं. And instead of trying to take a person who is not motivated and train them to become motivated, instead find someone who is already motivated. कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो मोटिवेटेड बिल्कुल भी नहीं है, जो नेगेटिव है, और उसको मोटिवेट कर करके कोई फायदा नहीं है, बल्कि कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो ऑलरेडी मोटिवेटेड है, जो ऑलरेडी जुनूनी है, और उसके साथ काम करना चाहिए.
And instead of trying to train a lazy person to become a hard worker, don't waste your time with them. Find someone who's already working hard. और एक लेजी व्यक्ति के साथ काम करने से अच्छा एक एनर्जेटिक व्यक्ति के साथ काम करना है. So as a strong leader, we do not waste time. We are focusing on the right people, and that is how we can build stronger and stronger results, and we have better duplication in our teams. और can you repeat please? Yes, so as a leader, we do not waste time with the wrong people. We look for the right people. और लीडर के तौर पे हम वेस्ट नहीं करते टाइम गलत लोगों के लिए, हम नए और सच्चे लोगों की खोज में रहते हैं. And when we prospect, we have to understand that our job is not to convince people to join the business. हम एज ए लीडर हमारा जॉब लोगों को कन्विंस करना नहीं है बिजनेस ज्वाइन करने के लिए. Our job is to sort through people to find the leaders. So we look next, oh, leader, next leader. We don't convince, we sort. हमारा काम नहीं है लोगों को ढूंढना जो लीडर बनना चाहते हैं. हमारा काम है सॉर्ट करना. हमारा काम है बाइफर्केशन करना कि कौन लीडर बन सकता है. And you have to understand that not everyone is going to be a strong leader. We need to go through the numbers. If you talk to 100 people, maybe only 3 people are what you need in your business. और हमेशा नंबर्स को देखें. हो सकता है 100 लोग आपके साथ ज्वाइन करें, लेकिन सिर्फ 3 लोग ही आपके साथ बिजनेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे. And for you to increase your numbers, you need to find what is your income producing activity. Is it online meetings that is creating results for you? Then do more of that. Is it physical meetings that do results for you? Then do more of that. और आपको देखना पड़ेगा कि इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी कौन सी है आपकी और वो सबसे ज्यादा काम कर रही है. हो सकता है वो ऑनलाइन हो और वो सबसे ज्यादा काम कर रही है. हो सकता है वो फिजिकल मीटिंग्स के साथ हो, वो सबसे ज्यादा काम कर रही है, वो कीजिए. And as a leader, you need to be able to taproot. Taproot means that you need to look at the organization. And sometimes level 11 or generation 10 is where you find the strong leaders. You need to be able to see your organization and find good leaders everywhere. और आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को टटोलना है और सबसे बेहतरीन लीडर्स को ढूंढना है. And when we are looking at where you should look at people, we found a lot of results by looking at this middle percent. When you're looking at hardworking business owners who already have a vision, that is the people we focus on. I didn't get it. Can you please repeat? Sorry. Oh, sorry. So for this, when you're looking for the right leaders, you're going to have the highest results if you are looking at this middle percent, the 27%. आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप ये मिडिल के क्वाड्रेंट को ये मिडिल पे फोकस करेंगे. आपको सबसे ज्यादा लीडर्स मिलेंगे. Where you're looking for hardworking people, you're looking for business owners, people with a vision. These people are what you're looking for. आप हार्ड वर्किंग लोगों को देखेंगे, ऐसे लोग जो बिजनेस ओनर्स हैं और जिनका एक स्ट्रॉन्ग विजन है, यहाँ पे आपको मिलेंगे लोग. Some people in network marketing, we try to get lucky. We try to go to the top leaders. We think we can send up one person and then we're going to make millions. That is not the reality. और बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे, वो लकी बनना चाहेंगे. वो सोचेंगे कि एक इंसान को मैं ज्वाइन कर दूं और सब कुछ हो जाए. And some people, they are focusing on the 70% of people. The people has no visions, no dreams. They have no drive. And you're just going to waste your time. So focus on the middle 27%. और बहुत से लोग एक मास लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जिनके कोई विजन नहीं है, जिनका कोई गोल सेटिंग नहीं है, जिनके लाइफ में कुछ नहीं है और यहाँ पे भी पहुंचे कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है. And as a leader, it's very important to not be judgmental, meaning you should look at every person you meet with the potential of becoming a leader.
और हर व्यक्ति के अंदर वो पोटेंशियल है लीडर बनने का, आप प्रीजज ना करें। Sometimes you think that a person is not going to become successful because they have no successful in the past, but maybe they are very hungry and they're going to create more results than others. हो सकता है कुछ लोग सफल नहीं हुए हैं अपने पास्ट में, अपने भूतकाल में, लेकिन हो सकता है वो बहुत भूखे हैं सक्सेस के लिए, वो बहुत हंगरी हैं सफलता के लिए, तो हो सकता है वो आने वाले समय में बहुत अच्छा कर सकते हैं। And as leaders, we got to understand the 4 phases of network marketing. और एज अ लीडर हमें 4 फेजेस नेटवर्क मार्केटिंग के पता है। Phase 1 is when you join a company. You're excited, it's new, it's fresh, and it's all exciting. और सबसे पहले जो फेज 1 में व्यक्ति बहुत एक्साइटेड होता है, फ्रेश होता है, एकदम ऊर्जावान होता है। You're calling everyone and you're not sleeping. You're trying to get everyone into your organization. और वो सोता भी नहीं है, वो हर एक व्यक्ति को कॉल करता है, सबको कॉल करता है। But then in every single company, we come into phase 2, which is when there's disappointment and challenges. और उसके बाद वो बैठ जाता है जब कोई डिसअपॉइंटमेंट, कुछ मुश्किलें, परेशानी आती हैं तो। And the weak leaders, they go to phase 3, where they jump to another company. They want phase 1 again. They want to get lucky. They want excitement, and they jump again and jump and jump and jump to different companies. This is the weak leaders. और जो कमजोर लीडर होते हैं वो यहाँ पे छोड़ देते हैं और किसी और कंपनी में जंप कर जाते हैं और वो आगे तक नहीं बढ़ते। Meanwhile, the strong leaders understand that if you fight for your success, you are going to reach financial freedom. And that is exactly what we're doing here. And I'm seeing you doing it for the past 6-7 years. So this is perfect story. और जो असली लीडर होता है वो इस लेवल को पार करता है और उसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, जैसे कि आप में से कई लोग जो 6-7 वर्षों से इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। So as a weak leader, you jump company to company to company to company. You lose respect. After a while, no one will follow you. और अगर आप कंपनी से कंपनी, एक कंपनी से दूसरी कंपनी जंप करते हैं तो आप रिस्पेक्ट को लूज कर देते हैं। When you stay in one path and you're dedicated, your respect grows and more people will follow you. और अगर आप एक ही पार्ट में हैं तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है और ज्यादा से ज्यादा लोग आपको फॉलो करेंगे। And this is why we always say a real leader have focus. They follow one course until successful. और इसलिए हम कहते हैं कि एक सच्चे लीडर के पास फोकस होता है, वो फॉलो करता है एक कोर्स को जब तक वो सफल नहीं हो जाता। फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। And that is why we're so grateful for Platin World, because in this company we have a long-term business. In all other crypto companies, a short-term, 6 months, 1 year, change is not possible. But here we can become strong leader because it's a long-term company. और यहाँ पे प्लैटिनम वर्ल्ड में ये एक बहुत लॉन्ग टर्म कंपनी है, इसलिए हम सफल हो सकते हैं। हमें एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से 10वीं कंपनी पे जंप करने की जरूरत नहीं है। And it's also important to understand that there is some sins of network marketing that we want to stay away from. और आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम कहते हैं पाप नेटवर्क मार्केटिंग में, जिससे हमें अवेयर होना पड़ेगा। And these are some points that weak leaders do, and is to remind you to stay away from these points. और इसमें से बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो वीक लीडर्स करते हैं और आपको उन सबसे दूर रहना चाहिए। A weak leader, they need help from upline. If no upline, they cannot work. और एक वीक लीडर को हमेशा अपलाइन की जरूरत है, और अपलाइन नहीं होगा तो ये काम नहीं कर सकता। A weak leader never take initiative. They never say, oh, let's do an event, let's do a webinar, let's do a training. They're just waiting for someone else to do it. और ये हमेशा इनिशिएटिव ले, वो सोचता है कि कोई और करे,
कोई तीसरा व्यक्ति करे, कोई चौथा व्यक्ति करे, कोई 10वां व्यक्ति करे। A weak leader doesn't understand hierarchy process. So if someone comes and asks a simple question, they send to upline. और एक जो वीक लीडर है वो हायरार्की प्रोसेस को नहीं समझता, और कभी भी कोई ऐसी चीज आती है वो अपने अपलाइन को भेज देता है। And a weak leader therefore have no knowledge, so they cannot answer questions. और एक कमजोर लीडर के पास नॉलेज नहीं होती, तो वो क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं दे पाता। A weak leader has to have promotions all the time to work. If there's no promotion, there's no incentive, they get lazy. और एक कमजोर लीडर को हमेशा प्रमोशन चाहिए, अगर उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा, कमीशन नहीं आ रहा, तो वो छोड़ देता है। A weak leader does not protect the company when we go through challenges. They are just blaming the company. A strong leader protects the company because it's our project. और एक वीक लीडर कभी भी कंपनी को प्रोटेक्ट नहीं करता, कंपनी के बारे में नहीं सोचता, और एक स्ट्रॉन्ग लीडर हमेशा कंपनी के बारे में सोचता है, क्योंकि ये हमारी कंपनी है। And the weak leader is talking behind other leaders. You're talking, gossiping, talking about other leaders. What is happening? People are going to see who you are and what you do, and you're going to lose respect. और एक कमजोर लीडर हमेशा दूसरे तीसरे लीडर से बात करता है, गॉसिप्स करता है, और आपने ये देखा होगा। A strong leader says, is there a problem? Let's talk it face to face, solve it, and you move on. This is strong leadership. और एक स्ट्रॉन्ग लीडर बोलता है, अगर कोई प्रॉब्लम है आइए इसका निवारण निकालते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। And a big point here is a weak leader overinflates the product. They're saying it, oh, you're going to become rich tomorrow. No problem. Sign up now and put the money in, and you're going to get so much money next month. Then you're going to lose your credibility if it doesn't happen. और एक कमजोर लीडर जो है वो क्या करता है, वो ओवर इन्फ्लेट कर देता है, ओवर प्रमोट कर देता है कि आज आप पैसा डालो, ये करो, वो करो, और कल के दिन से आप अमीर बन जाओगे, बहुत जल्द अमीर बन जाओगे, ऐसे लुभाव में सपने दिखाता है। A strong leader says, this is the benefits, this is the risks, this is why I joined. You make your own decision. और एक स्ट्रॉन्ग लीडर बोलता है, ये बेनिफिट है और ये रिस्क है, और अब आपका डिसीजन है। A weak leader, they work very hard 1 week, then they relax, go vacation 2 weeks. Work very hard 1 week, go vacation 3 weeks. और एक वीक लीडर कुछ महीने काम करता है, 1-2 महीने, और उसके बाद वेकेशन पे चला जाता है। A strong leader have consistency, push, create momentum. And again, people do what you do. So if you want momentum, you bring momentum. और एक स्ट्रॉन्ग लीडर हमेशा मोमेंटम लाता है, क्योंकि अगर आपको मोमेंटम चाहिए तो आपको पुश करना पड़ेगा। And in this company, we have now over 1.5 million members. And if we want this to explode, and if you want all of this to become successful, we have to come together. और अगर हमारे इस कंपनी में लगभग 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, 15 लाख से ज्यादा लोग हैं, और अगर हम चाहते हैं कि सब एक साथ हो, एकजुट हो और ग्रोथ हो, हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। I'm from Sweden. I have a team here. You guys from India, you have a team there. But I'm here with you. We're different teams. Why? Because if you succeed, it's better for me. If I succeed, it's better for you, because we're one team, one company, and one family. और एमिल स्वीडन में है और उनकी टीम वहां पे है स्वीडन में। हमारे से उनको कोई खास लेना देना है नहीं, लेकिन वो जानते हैं, और इस फिर भी वो आज यहाँ पे प्रेजेंटेशन में है, और वो जानते हैं कि अगर हम सफल हुए, हमने सक्सीड किया तो उनका फायदा है, और अगर उन्होंने सक्सीड किया तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा फायदा है। So we all have one goal. We all want to make money. We all want this company to succeed. So we all need to unite, and we stop fighting, stop talking whose team is who. One big team, one family, and that is how we're going to reach the big success. और हम एक बड़ी टीम है, एक परिवार है, एक फैमिली है, और ये उसकी टीम, ये मेरी टीम, ऐसा कुछ नहीं, हम सब एक हैं, और इसी वजह और यही जुनून, यही जज्बे के साथ हम सफल होंगे।
And if you as a leader wants to build more respect and you want to really help your team, remember this: a person who feels appreciated will always do more than you expect. और अगर आपको अपनी टीम को बढ़ाना है, टीम के स्तर को बढ़ाना है, तो एक चीज समझनी पड़ेगी, एक व्यक्ति जिसको जो जो अप्रिशिएटेड महसूस करता है हमेशा, वो हमेशा कुछ ज्यादा करेगा. So sometimes take your phone and call your leaders and say, I'm really happy with my team. I'm so grateful we work together. And I'm very, very appreciative that you are doing the hard work. और कभी भी किसी भी दिन जब भी आपको लगे, अपनी टीम को कॉल करें और उसे फोन करें कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं बहुत प्राउड हूं, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं आप पे जो seems not necessary, but long term it make you a better leader and people will follow you because they like you, because they feel you care. और हो सकता है ये चीजें आपको लगे ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन आने वाले लंबे समय तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो. And as a leader, we need to understand the reason we want to grow as leaders is because when you grow as a leader, your business grows because more leaders start growing, and this is the only way to create a huge organization. और जब आप एज ए लीडर ग्रो करते हैं, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी पूरी टीम्स, आपकी सारी शाखाएं भी ग्रो होती हैं. And one important lesson that I've learned was that it is not what works that is important, but it's more important what duplicates. और ये महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या काम करता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि क्या डुप्लीकेट होता है. So if you are an individual who do the perfect presentation and you close business every time you do your presentation, but no one else can do like you, then you can never build a big business. अगर आप एक बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं और ऐसी प्रेजेंटेशन करते हैं कि कोई भी आपके जैसे प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, तो आप कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं बिल्ड कर पाएंगे. So better make the presentation easier so more people can do the same. So it's better because now everyone can do it. Now you got thousands of people doing presentation and your team grows faster. और कुछ ऐसा करें जहां पे लोग आपको डुप्लीकेट करें, जो भी कर रहे हैं उसको और आसान बनाएं ताकि हजारों 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 लोग सेम कर पाए. And what is it that we are trying to do here? The reason we're organizing these calls, the reason we are cross lines talking and discussing big leaders is because our goal is to go from small teams to movement where everyone is just coming together. और हमारा गोल क्या है? हम एक मूवमेंट क्रिएट करना है जहां पे छोटी छोटी टीम्स एक बड़े मूवमेंट का हिस्सा बन जाए. Because when we work together, you can give us ideas, we give you ideas, and when you have momentum, it inspires us to have momentum. When we get momentum, it helps you to get momentum, and now we all have momentum and we grow faster. और जब हमारे पास टीम होती है तो वो टीम मोमेंटम क्रिएट करती है. हमारे पास कुछ आइडिया होते हैं, वो हम आपको देते हैं, आपके पास कुछ आइडिया है, वो आप हमें देते हैं, और इससे एक बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट होता है. And that is what we are trying to do here: build the biggest movement and the greatest leadership that this industry has ever seen before. और हम यहाँ पे सबसे बड़ा मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जो इस इंडस्ट्री ने शायद ही कभी देखा. And again, we are so proud to see what you guys have done in India, the leadership you have, the leaders you have very strong leaders, very strong leadership. And we are also inspired by you, and we can learn a lot from each other. और हम देख सकते हैं कि भारत में कितनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, कितने स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, और हम भी आपसे इंस्पायर होते हैं और आपसे प्रेरणा लेते हैं. So after this training, we have to learn a leader stand out. A strong leader takes this information and applies straight away. They use this information to implement straight away. और जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा स्टैंड आउट करते हैं, वो चाहे इंफॉर्मेशन में हो चाहे वो किसी भी चीज में हो. And we as leaders need to understand that momentum does not happen to us.
We have to start momentum to generate momentum. और हमें मोमेंटम अपने आप नहीं होगा, हमें मोमेंटम जनरेट करना पड़ेगा, हमारे थ्रू ही ये संभव होगा. That is why the last slide I'm going to share with you is that the formula to create momentum is to do 90-day game runs where we go hard, where we put much energy in and we push hard for 90 days. और हमें इस मोमेंटम को क्रिएट करने के लिए 90 डेज गेम प्लान पे फोकस करना पड़ेगा. 90 दिन एक ऐसा समय है जहाँ पे हार्ड कर सकते हैं और सारी एक्टिविटीज पे फोकस कर सकते हैं. So this is a chance for all of you to do a little bit more than you've done before. No matter what rank you are, let's all do a little bit more effort, more presentations, more trainings, and increase intensity, and then we can get new energy into the teams and we have all big explosion. और ये मैटर नहीं करता डिस्पाइट कि आपके रैंक्स क्या हैं, आप किस पोजीशन पे हैं, जो जितना भी आप कर सकते थे या कर रहे थे उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा आप करें, ताकि हम वो एनर्जी सबके अंदर देख सकें. चाहे वो प्रेजेंटेशन हो तो प्रेजेंटेशन ज्यादा करें, टीम वर्क है तो टीम वर्क ज्यादा करें. So this is a summary of our leadership training. We invite you guys to follow and duplicate and add this and always try to become a better and better and better leader every single day. और ये समरी थी लीडरशिप की, और हम चाहते हैं कि आप बेहतर बेहतर और बेहतर और बेहतर लीडर बने हर दिन हर समय. And when you take people through this journey of first learn the 7 skills of network marketing, then learning how to lead your team properly, and tomorrow how to create a bulletproof mind to get to the top of this industry. और इस प्लान में हम जान रहे हैं कि हम कैसे बेहतर हो सके और क्या वो स्किल्स हैं जो हमारे भीतर होनी चाहिए, और कल के दिन हम जानेंगे कि कैसे हमारा एक बुलेट प्रूफ माइंड हो. So thank you so much, all of you, for coming on and to sharing your time here with us. We are grateful to be in touch with your team and we learn from you as well. So guys, let's go crazy and let's see each other in Dubai for the 4th of March at an incredible event. और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोग यहाँ पे इस वेबिनार में हमारे साथ मौजूद थे इस पूरी ट्रेनिंग के लिए, और हम आप सबसे बहुत इंस्पायर्ड हैं, आप सबसे इंस्पिरेशन लेते हैं, और मैं चाहता हूं कि हम सब एकजुट हों वापस दुबई में 4 मार्च को. We have been looking for a company for 3 years until we find PLCU, and now we finally find a home, guys. So let's build together, let's make this a success, and I'll see you guys on the next training. और 3 वर्ष से हम ऐसी कंपनी ढूंढ रहे थे जहां पे हम जिसको हम फाइनल होम कह सकें, और 3 वर्ष लगे इस कंपनी को हमें ढूंढने में, और अब रॉक करते हैं. Thank you so much, guys. Thank you, Sumit. Thanks to all the key leaders, and let's become better leaders, all of us. 100%. Thank you very much, Mr. Amel. Thank you very much for your time, your dedication, and the presentation and the training you have done with us, and all the approximately 800 people over the call. Thank you very much. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिस्टर एमएल का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो हमारी टीम से नहीं है और ना ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी टीम से कनेक्टेड है, लेकिन स्टिल वो जानते हैं लीडरशिप की पोटेंशियल, रिलेशन मार्केटिंग की पोटेंशियल को, और कितना शक्तिशाली होगा जब हम सब एक प्लेटफॉर्म पे एकजुट होकर आ जाएंगे. आज 5 दिन से लगभग 1000 लोग, प्लस माइनस 1000 लोग डेली ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, प्रेजेंटेशंस में आ रहे हैं, और जस्ट इमेजिन ये अगले 90 दिन तक चलता है. सिर्फ 90 डेज तक अगर हम ये 1000 लोगों को 2000, 5000, 10,000 लोगों में कन्वर्ट करते हैं तो कितना बड़ा मोमेंटम क्रिएट होगा. आज आप सब स्क्रीन पे वो लोग हैं जो कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं एज अ कस्टमर, बल्कि बिल्ड करना चाहते हैं. तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ. कल के दिन हमारे पास है माइंडसेट एंड मोटिवेशन कॉल. तो कल का दिन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो. कल के दिन मैक्सिमम लोगों को 7:30 शाम को इवनिंग इंडियन टाइम पे इनवाइट करें, और मैं आप सबका
थैंक यू वेरी मच मिस्टर एमएल फॉर बीइंग हियर। मैं सभी ग्रेट लीडर्स का जो रोज Thank you कॉल so पे आ much, रहे हैं, guys. जो रोज कॉल पे आ रहे हैं अपनी टीम्स के लिए, अपनी टीम्स के साथ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। द टाइम्स नाउ।